ऑप्शन बाइंग में पैसा गवाया। इंट्राडे करने के बाद 2-3 महीने में कुछ नहीं मैं कमा पाया। कम से कम मेरे लर्निंग जर्नी में 5 से 8 लाख तक मैंने गवाया है, लॉस किया है टोटल 4 to 5 years में। Literally no movement, no need of any adjustment, no need to do anything. So all you had to do is get up in the morning, sell options, go to sleep, wake up at 3:30 with a profit. System हमें ट्राई किया था लेकिन ठीक से चला नहीं। जब भी स्ट्रैटेजी सभी लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना, वो स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो है ना हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग आए हैं बैंगलोर में, और बैंगलोर में हम लोग आए हैं साकेत के पास। सो वेलकम साकेत। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मेरा हिंदी थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बात करने के लिए। और मेरा इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा आपसे इंग्लिश में थोड़ी तरीके से समझाने की। श्योर सर, श्योर। सो साकेत, ये जो हमारा पॉडकास्ट सीरीज़ है ना, ये बेसिकली इसका नाम है मास्टर्स इन वन पॉडकास्ट। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में देयर आर डिफरेंट वे टू अर्न मनी, राइट? ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग, इक्विटी एंड ऑल दिस थिंग। बट आई बिलीव कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो फर्स्ट यू हैव टू मास्टर इन वन स्ट्रैटेजी एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस दैट स्ट्रैटेजी फॉर अ लाइफ टाइम। एंड आगे जाते जाते जैसे आपको उसमें चेंजेस करना हो वैसे आप चेंजेस करते रहे। तो नाउ आज हम लोग देखेंगे कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो और आप कौन सी स्ट्रैटेजी में मास्टर हो। एंड बिफोर दैट टेल मी, आपने स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट किया? एंड आपको देख के मुझे ये लगता नहीं है कि आपका एज ज़्यादा बड़ा है, तो टेल मी योर एज ऑल्सो एंड हाउ यू स्टार्टेड योर स्टॉक मार्केट जर्नी, दैट थिंग ऑल्सो। श्योर सर। मैंने मेरा स्टॉक मार्केट जर्नी 10 साल पहले स्टार्ट किया था, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। 8th स्टैंडर्ड में पहले बार इक्विटी आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इक्विटीज। So like I just started trading equities because my father was an investor. Okay. So because of him I actually saw stock market, and then I bought my first stock when I was in 8th standard. So which was your first stock? Reliance. Yeah, oh, lucky, good. So I think Reliance was trading around 800 rupees that time. So now it's around 2,400. So then post that slowly I started trading intraday equities. इंट्राडे इक्विटी के बाद मैं 2-3 साल के बाद मैं ऑप्शन बाइंग में आया। ऑप्शन बाइंग में पैसा गवाया। ऑप्शन बाइंग? हाँ, ऑप्शन बाइंग में आया और पैसा गवाया। और फिर 2017 में मैं ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया। So 2017 में मैं पहली बार ऑप्शन सेल किया, और उसके बाद सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में रुका हूँ अभी तक। तो अभी भी आपके फादर इन्वेस्टमेंट करते ही है स्टॉक मार्केट में। तो आपके फादर का कैसा रिप्लाई था जब भी आपने उनसे ही सीख के इक्विटी चालू किया था, एंड देन यू स्टार्टेड इंट्राडे, फिर ऑप्शन बाइंग, तो आपको इतना सारा फेलियर हुआ, तो आपके घर पे कैसा रिप्लाई था आपके लिए? तभी क्या होता था कि जब मैं पहली बार स्टॉक मार्केट देखा, मैं देखा सभी स्टॉक्स एक दिन में 2%, 3% ऊपर बढ़ रहा है या गिर रहा है। मैंने सोचा क्यों हम इन्वेस्ट करके एक साल में 20% कमाएं। अगर इफ़ आई कैन कैच 1% एवरी डे, आई कैन मेक 300-400। एक्सेल कैलकुलेशन आई मेड, एंड आई वाज लाइक ओके, लेट मी ट्राई इंट्राडे। इसी तरह मैं इंट्राडे स्टार्ट किया। इंट्राडे करने के बाद 2-3 महीने में कुछ नहीं मैं कमा पाया, और फिर सोचा ठीक है मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। सिर्फ इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया। स्टॉक बाई करके 2-3 हफ्ते होल्ड करके सेल करता था। वो भी ठीक से नहीं चला, और फिर सोचा, फिर ज़ीरोदा वार्सिटी के तरफ से मैं ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सीखा। पहली बार ऑप्शन सीखा ज़ीरोदा वार्सिटी के तरफ से, और मैं सोचा ठीक है मैं एक बार ऑप्शंस भी ट्राई करता हूँ।
सो मैं ऑप्शंस मार्केट वॉच में डालकर देखा ऑप्शन स्टॉक 1 और 2% जा रहा है लेकिन ऑप्शंस 20% 40% वो सब then that calculation is different now. Yeah, that calculation is totally different. So that time I was like, okay, forget stocks. I will go to options because I have to wait to make 2%. I have to wait whole day. But here I will be able to make 40% in single day, and some options are also going 400, 500%. So जब मैं ऑप्शन बाइंग में आया मेरे फादर से मैं 2000-3000 लेता था और ट्रेडिंग करता था क्योंकि इंट्राडे में भी 20x 30x लेवरेज था। अकाउंट किसके नाम पे था? बिकॉज मेरा फादर के नाम पे। अच्छा, उनके नाम पे अकाउंट था। ओके। सो कभी भी मेरा कैपिटल 20,000 या 25,000 से ऊपर नहीं था जब मैं लॉस कर रहा था क्योंकि तभी लेवरेज था और इंट्राडे में 20x 30x था और बाइंग के लिए भी 2,000-3,000 काफ़ी था। इसलिए मेरा अकाउंट साइज़ 20,000 25,000 के अब वो कभी नहीं चला। सो वो सभी वक्त में लॉस कर रहा था लेकिन आई वॉज डूइंग 2 थिंग्स। The one thing I was constantly reading, so every day मैं जाके पढ़ रहा था और एनालिसिस करने के लिए कोशिश कर रहा था। वो देखकर my father was like, okay, like whenever I lost money, he was like, I will give you last 2,000, last 5,000, you try it out, you try it out. So इसी तरह उन्होंने मुझे encourage किया और वो कम से कम 3 और 4 साल के लिए मुझको फंड किया क्योंकि जब भी मैं स्टार्ट किया था 2013 में तभी 2,000-3,000 का मेरा कैपिटल था और मैक्सिमम 2 मंथ्स उसके बाद ज़ीरो होता था फिर से 2,000-3,000 अगेन 2 मंथ्स ज़ीरो होता था फिर से 2,000-3,000 इसी तरह वो मुझे 3-4 साल के लिए फंड किया। सो कम से कम मेरे लर्निंग जर्नी में 5 से 8 लाख तक मैंने गवाए हैं, लॉस किया है टोटल 4 to 5 years में। But this is very grateful that your father was supporting you. True sir, that is very true. Thank you uncle, because of that support he is here today and now he is trading very good in options. So post that in 2017 I started option selling. So again, so my father was actually telling don't do option buying, it is not good for long term. He used to tell me over and over again, but मैं कभी भी उसको नहीं सुना। फिर जब 3-4 साल कुछ नहीं चला मैं सोचा ठीक है बाइंग सेलिंग भी एक बार ट्राई करता हूँ। सो 2017 में मैंने पहली बार ऑप्शन सेल किया। 2017 में ऑप्शन सेल करना बहुत आसान था क्योंकि मार्केट ओपन होता था फिर होल डे डीके होता था, कुछ नहीं। मार्केट वाज ओपनिंग फुल डे कंसोलिडेशन, लिटरली नो मूवमेंट, नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट, नो नीड टू डू एनीथिंग। सो ऑल यू हैड टू डू इज गेट अप इन द मॉर्निंग, sell options, go to sleep, wake up at 3:30 with a profit. It was you are talking about intraday options selling. Intraday option selling, even positional. Very easy it was because market में volatility नहीं था। और एक और क्या बात है, उसी समय लेवरेज भी था, 20x 30x लेवरेज था। उसके बेनिफिट को यूज़ करके सिर्फ आपके पास 20,000 या 30,000 हो तो 6 लाख 7 लाख तक आप ट्रेड कर सकते थे। सो इसलिए मैं क्या करना स्टार्ट किया। सो 2017-2018 में मैंने सोचा ठीक है इंट्राडे पोजिशनल सब छोड़ते हैं, सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड करते हैं। सो एक्सपायरी में सिंपल स्ट्रैटेजी, निफ्टी ऑप्शंस, sell options trading at 2 rupees, sell options trading at 3 rupees and keep double stop loss. 3 rupees you sell the option, keep 6 rupees stop loss. 3 rupee put option you sell, keep 6 rupees stop loss. And your profit is total 3 rupees. Close and go. But the advantage is, even if you had close to around 20,000, to sell one lot you needed
2,000 रुपीज़. सो 2,000 सिर्फ 2,000 चाहिए था एक लॉट बेचने के लिए. Okay. सो 20,000 होते 10 लॉट आप बेच सकते थे. So बिकॉज ऑफ द लीवरेज. हाँ, because of the leverage. So almost around 1,500 quantity हर expiry आप बेच सकते थे. So 3 point क्या होता था कि almost around 80% of the times, 70 to 80% of the times, option, both of them go to zero. 9:15 you sell 3 rupees. Without hitting the stop loss, both options used to go to zero. ओ इतना लिक्विड था. इतना illiquid भी नहीं, इतना मार्केट जीरो मूवमेंट इन मार्केट, इतना इजी था ट्रेड करने के लिए. इसी समय आप कोई भी बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी देखते हो, कोई भी स्टॉक मॉक वरना एल्गो टेस्ट कभी भी जाकर बैक टेस्ट देखते हो, 2017 में सबसे बड़ा प्रॉफिट आया होगा क्योंकि मार्केट कोई भी थोड़ा सा भी मूव नहीं करता था. और सो 3 रुपये के लिए बेचो, 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखो और क्लोज करो. 80% ऑफ द टाइम्स दोनों ज़ीरो होता था. रिमेनिंग 20% ऑफ द टाइम्स ज़ीरो प्रॉफिट में आप निकल सकते थे. हाँ, 3 रुपीज़ 6 रुपीज़ one stop loss will hit and other one will go to. Or you can say 10%, like 70%, 20%, and 10% of the times 2 stop losses also used to hit. But overall, if you look at this whole thing, it was a very simple game because. So which is this strategy? It was working that time. Which was this strategy? Simply sell OTM on an expiry day. Nothing. No, don't do anything. Simply sell OTM on expiry day. Keep stop loss and go to sleep. Yeah, very simple strategy. So जब ये काम करना स्टार्ट किया, हमने सोचा मैं और मेरे दो फ्रेंड्स सोचा ठीक है हम यही स्ट्रैटेजी हमारा फ्रेंड्स के सामने जाकर बोलकर 500 या 1000 लेकर एक फ़ंड जमा करते हैं. फ़ंड जमा करने के बाद वो फ़ंड लगाकर हम सेम स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हैं. And this time you are in college, right? This time we were in college. I was doing my undergraduation. Okay. So इसी तरह 22,500 हमने जमा किया और हमारा कैपिटल सभी डालकर ऑलमोस्ट अराउंड 50,000 हमारा कैपिटल था. सो हर हफ्ते हम ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड 3% करते थे क्योंकि लेवरेज था और सिंपल स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल था. सो हर हफ्ते 3 to 4% हम सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करके कर सकते थे. सो इसलिए हमारा अकाउंट भी बहुत बड़ा ग्रो करना स्टार्ट किया. और फिर से जब ये ग्रो कर रहा था हमारा ये सब कॉलेज में भी फैल गया, ये सब मैनेज कर रहा है. फिर हमारा टीचर ने थोड़ा फंड डाला और मेरा फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने थोड़ा फंड डाला. इसी तरह टोटल हम जब मैनेज कर रहे थे पहले बार 22,000 से स्टार्ट किया था, फिर वो 3 लाख चला गया, 5 लाख. इसी तरह कॉलेज हम जब भी ख़त्म करने का समय में टोटली अराउंड 30 to 40 लाख हमारे पास इसी तरह जमा हो गया था. तो आपका कॉलेज कभी ख़त्म हुआ, कौन से साल में? 2019. ओके 2019. सो साकेत, आपका जर्नी तो बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो कि यू वेर ब्लेस्ड दैट आपको बैकग्राउंड मिला स्टॉक मार्केट का एंड फ्रॉम देयर यू गॉट द एक्सपीरियंस. एंड फिर आपने बहुत सारी चीज़ें की, उसमें आपको पता चला ये वर्क नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है. तो साकेत, अभी जैसे आपने बोला कि वो पहले 2017-18 में बहुत ईजी था टू अर्न मनी इन ऑप्शन सेलिंग. सो अभी वो डिफ़िकल्ट हो गया है? हाँ, अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है. मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए ईजी होगा. So now what is happening is unlike previously where the market used to open and only consolidate, now there is lot of volatility. Intraday it opens, goes higher, comes down. So it is also one of the reasons because lot of people are now doing selling. Before in 2015, 16, 17 and all, there were hardly few option traders and hardly few option sellers. Nobody used to sell options. Everybody used to only buy options. One reason might be that since so many people are now selling options, it might be one reason that option selling is no longer so easy because lot of people have come into So basically that strategy was profitable. Yes.
but now many people know this strategy and everybody is doing the same So thing. now it will not work at all because everybody who trades expiry will know that 3 rupee option if you sell today will end at 0, but before ending at 0 it would have gone to 12 rupees, 30 rupees and I have then seen it some went to 50 rupees also. yeah, very possible, and especially in Fin Nifty, if you see towards the end of expiry. So especially when you are coming around 12 o'clock, 1 o'clock. So 2 rupees, 3 rupees options will just randomly spike to 30 rupees and come down to 0. That's why many people like nowadays Fin Nifty. Yeah. For especially buyers, Fin Nifty they prefer because of such kind of volatility. So now all those strategies are out of question. The one there is no leverage. अभी हम वो स्ट्रैटेजी ट्राई किया तो उसी समय लेवरेज यूज़ करके 3% हर हफ्ते बना सकते थे. अभी विदाउट लेवरेज ट्राई किया तो सिर्फ 0.1 0.2% बेस्ट केस बना सकते हैं, क्योंकि उसी समय ऑलमोस्ट अराउंड 20x 30x था. सो 0.1 into 30 3%. सो मैक्सिमम 0.1% बना सकते हैं, और अभी वो भी नहीं काम करेगा. ओह, तो साकेत, नाउ अभी आप क्या करते हो फिर? आपको जब भी पता चला कि ये ऑप्शन सेलिंग में अभी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, तो अभी भी आप ऑप्शन सेलिंग ही करते हो? अभी मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, लेकिन मेरे स्ट्रैटेजी को मैं 2019 और 20 अराउंड 19-20 मैंने चेंज किया. वही से अभी तक मैंने सिर्फ स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स ही किया हूँ. सो 2019 व्हाट हैपेंड इज वी गॉट अ न्यूज़ सेइंग दैट लेवरेज विल go in 1 year. SEBI came out with a circular telling all the leverage will be banned in 1 year. So now we knew that 2 years what had done really well for us. So we had grown 100% year on year. So we knew that it is not going to work anymore, because if leverage goes, our entire game is gone. Right. So we knew that this is not possible and it is not going to work anymore. So this is when we had to come in closer and collect more premium. So instead of selling 1,000 quantity at 3 rupees, I can only sell 10 quantity at 300 rupees. Like, just to give you perspective. So पहले आप out of the money 1,000 quantity अभी आप at the money 300 points सिर्फ 2 और 3 लॉट भेजा. So basically you are investing same amount. Yeah. But the premium price has changed. Yeah, premium price has changed. Our quantity has reduced. So this was the only way where we could maintain our rate of return, because previously what we were using because of leverage, that was not possible because of the leverage going. So that's when we started coming closer with higher premiums. So premiums trading at 60 rupees, 80 rupees. Then we also went to ATM, where premiums were trading at 200 rupees, 300 rupees. And that's how we shifted from selling far OTM to creating straddles and strangles. Okay, but मैंने ऐसा सुना है, I am not doing any option trading, but आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के कॉल और पुट में इतनी मोमेंटम ज़्यादा नहीं होती है. ट्रेड इतना मतलब डेली ऊपर नीचे नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल इफ वी गेट सम बिग मूव. बट जब आप एट द मनी आते हो तो उसमें बहुत सारा मोमेंट होता है. देन हाउ यू मैनेज स्टॉप लॉस एंड ऑल दिस थिंग्स? सर, इधर वन इम्पॉर्टेंट थिंग है क्वांटिटी. जब मैं OTM कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, OTM 50 रुपीज़ जब मैं सेल करता हूँ, समझो 1000 क्वांटिटी में सेल करता हूँ 50 रुपीज़. 50 रुपीज़ के बदले मैं 200 रुपये के सिर्फ 200 क्वांटिटी बेच सकता हूँ. सो OTM सेल करने के एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि जब OTM लेट्स से मार्केट स्टार्ट्स मूविंग इन वन डायरेक्शन, मतलब OTM ATM हो गया तो, हाँ, OTM ATM हो गया तो if market starts moving in one direction, this 50 rupees will go to 100 rupees, 150 rupees and so on. Whereas the other 50 rupees won't even fall below 20 rupees. Maximum it will come to 10 rupees. So it is not going to go down to 0. But on the other side, it can start surging any level. So now if you actually do small quantity with ATM, so what will happen is this 250 rupees, even if it goes to 350 rupees, the other one would have fallen 70 points.
from 350, if it goes to 450 rupees, this would have come to 70 rupees. And at this point, you still get to cut. So this is one advantage of doing ATM with smaller quantity, so that if you actually look at it overall, even M2M swings, if you actually look at it, with smaller quantity ATM is much lesser than bigger quantity OTM. So this can be quite easily observed. ओके तो साकेत अभी टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया मार्केट में? सर मार्केट में टोटली अराउंड 10 साल हो गया, और ऑप्शन सेलिंग में कम ऑलमोस्ट अराउंड 4 साल हो गया। और आपकी 4 नहीं, 6 साल हो गया। तो आपके स्कूल में और आपके कॉलेज में ये सब ट्रेडिंग की वजह से आपके कुछ इम्पैक्ट नहीं होता था? सर होता था, थोड़ा बहुत होता था। क्यों तो क्या आप अच्छे स्टूडेंट थे कि एवरेज थे या पुअर? थोड़ा वो एवरेज था, थोड़ा लाइक अराउंड 90 स्कोर करता था। दैट इज अबव एवरेज, दैट इज गुड ना। ओके, डिसेंट। हाँ, ऐसे ही स्कॉलर लोग क्या करते हैं पता है, हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट जो 45-50% मार्क लेके आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अबव एवरेज है। अबव एवरेज मतलब 90%, दैट इज गुड यार। सो लेकिन स्टेट बहुत था इसलिए थोड़ा इजी था। ओके तो आपने आपका स्टडी फिर किस में कंप्लीट किया? मैं बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट किया, उसके बाद एक जॉब मिला। उस समय क्या हुआ कि ये सब हम कर रहे थे 20-30 लाख पहले से था। सो मैंने बोला एक बार मैं मुझको ट्रेडिंग में ही काम मिला था। हाँ, करियर करना था और ट्रेडिंग में ही काम मिला था। एक प्रॉप फर्म मुंबई में मिला था, एक्सेला का नाम का। सो मैंने सोचा क्या मैं जॉब एक्सेप्ट करूँ या like one time shall I try doing something. फिर सोचा okay, I will try going with this. I will try for 1 year. If I am not successful, if I am not able to trade well, then I will shift back to a job. Okay. So then once college got over, I got the job, but I rejected the job, and I thought I will just give it try for 1 year. And again here, like both my parents supported. My mom was not very happy with my decision of quit. So she was okay with me trying to trade in markets and all, but she was not very happy. For markets, I am leaving a job. Okay. So then I was like, I'll try for 1 year, and then after that, once things started going well, and then like I am glad that I made this So decision. now your mother is okay. Still, she is not very happy because my graduation is only till BCom. She wants me to study further, and that is why I also took up CFA. Because I couldn't do MBA at that time, so I also took up CFA. I cleared first level. Second level, I actually failed because I didn't get time to prepare. I went and wrote, but I couldn't clear it. So then after that, I still haven't given CFA at all. So maybe I have to register and try to complete what I have left. Okay, that is very good, Saketh. So अभी साकेत आपके बारे में हमने मतलब पता लगाया, आपने बताया ये सब चीज़, तो अच्छी बात है यार। अगर कोई पेरेंट्स अपने सपोर्ट करता है तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे हमारे जो फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो जब भी मुझे मिलते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं कि हमें ट्रेडिंग करना है बट हमें घर से ही अलाउ नहीं होता है, बिकॉज इन इंडिया स्टिल मैनी पीपल थिंक्स के स्टॉक मार्केट इज़ गैम्बलिंग एंड ऑल दिस थिंग। तो साकेत, नाउ आप डेली बेसिस पे कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो? सर मैं डेली बेसिस में स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल अप्लाई करता हूँ। सिर्फ स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल। सो ऑलमोस्ट 4 साल से 2019 से हम सिर्फ स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल ही कर रहे हैं। और अभी भी हम सेम स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। तो जस्ट आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, टू जस्ट से दैट मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को शायद ये नहीं पता होगा कि स्ट्रैडल क्या है, स्ट्रैंगल क्या है। अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, but to just summarize that what is straddle and what is strangle? So straddle strangle, जब भी आप straddle strangle करते हो, so आप सोचते हो कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, एक रेंज में रहेगा। Okay. ये रेंज आप डिफाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो इस हफ्ते के एक्सपायरी के पहले निफ्टी 19,000 और 20,000 के बीच में कंसोलिडेट होगा। Okay. जब आप क्लोज़र या क्लोज़र बेट करते हो तब आपका रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं बोलता हूँ 19 या 20,000 के बीच में रहेगा,
मेरा चांसेस सही होने का बहुत ज़्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मेरे को रिवॉर्ड कम मिलेगा बिकॉज द प्रीमियम इज लो। प्रीमियम इज लो। जब मैं बोलता हूँ मार्केट 19,200 से 19,800 तक कंसोलिडेट होगा, क्योंकि मेरा रेंज कम हो गया है, मेरा प्रोबेबिलिटी कम लो हो जाएगा। हाँ, इसलिए मुझको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, सो बेसिकली दैट फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड straddle, strangle. So as you start coming closer and closer, so you tell that okay, so if today Nifty is trading around 19,500, Okay. so you sell both 19,500 call option, 19,500 put option. You would have collected some premium. Let's say today you will be collecting around 200 points premium. ओके, So आप बोल रहे हैं 200 पॉइंट्स के ऊपर या नीचे 19,700 एंड 19,300 हाँ के बीच में कंसोलिडेट होगा। जब आप करेक्ट होते हो तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी भी कम है। हाँ। सो जब भी आप दूर का बेट लगाते हो तभी आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो अगेन वन समराइज, जब हम लोग आउट ऑफ द मनी, मतलब नॉट आउट ऑफ द मनी, suppose Nifty is trading at 19,000 and I am selling 19,500 and 18,500 put, so that is called strangle. Yeah. And I am coming closer to Nifty, that is called straddle. So if you are selling exactly where Nifty is, Okay, that is a straddle. One above also if you go, it is a strangle. So मैंने तो कुछ ऐसा सुना है 920, क्या होता है वो 920? So 2017-18 में क्या हुआ था कि जब भी आप जैसे मैंने बोला, जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में, मार्केट सुबह बेचो, go to sleep and come and see. So what used to happen is this became very popular because 920 you just do a straddle and leave it. Okay. And by evening you used to have very good profit. So that is why this 920 straddle became very popular. And then, so this became popular by 2020 and 21 when backtesting came. So when backtesting came, people actually started testing intraday straddles, intraday strangles. And in actually 2016, 17, 18, it is profitable. Yeah, it is doing really well back in those days. But after that, it stopped working. So once lot of people got to know, like a lot of people saw that, okay, backtested and saw it is doing so well. And from that, slowly it stopped working. And post that, so that is when 920 actually gained its popularity around 2020-21. And then it started reducing again. Okay. So साकेत, आप बोल रहे हो कि अगर वो अभी इतना पॉपुलर हो गया है कि अभी वो नहीं चलता है, तो आप कैसे प्रॉफिट करते हो? सर हम ट्रेडिंग में दो तरह के होते हैं इंट्राडे में। वन सिस्टम ट्रेडिंग या दूसरा डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। सिस्टम ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आप सभी रूल्स को पहले से आप डाल रख के तुम ट्रेड कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 920 I will come to the market, I will sell call and put, I will keep a fixed stop loss and I will go. So सभी डिफाइंड है, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइंड है, मेरा एंट्री डिफाइंड है, एंट्री का टाइम डिफाइंड है, एग्जिट डिफाइंड है। ये होता है सिस्टम ट्रेड। सभी मेरा एंट्री डिफाइंड, सभी डिफाइंड है। तो मार्केट ऊपर गया नीचे गया तुम कुछ भी नहीं देखते हो, सिर्फ 920 आकर एक स्ट्रैडल डालते हो और स्टॉप लॉस रखते हैं। सो डिस्क्रिशनरी में क्या होता है, आप आपके दिमाग को यूज़ करके, सो सिस्टम कुछ भी नहीं है, रूल्स कुछ भी नहीं है, स्ट्रैडल करते हो, बट entry is 9:20, 9:30 or 10 o'clock, you don't know. So you wait for the market to finish the move and consolidate, and then you enter the short straddle. There is no stop loss. You wait for markets to either break the important support or break the important resistance, and once resistance is broken, you can also do some adjustments. So system trading में adjustments वगैरह कुछ नहीं होता है. So whenever market is breaking above the resistance, you can adjust your call leg. Whenever market is breaking below the support, you can adjust your put leg. So दो तरह के ट्रेडिंग होते हैं. अभी हम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं. सिस्टम हमें ट्राई किया था, लेकिन ठीक से चला नहीं. कुछ देर के बाद सिस्टम ठीक से चलना बंद हो गया. 2021 लास्ट हाफ और 2022 के बाद फिर से वही सिर्फ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर. सो साकेत, तो आपका बोलने का मतलब है कि बैक टेस्टिंग का कोई इम्पोर्टेंस अभी बचा ही नहीं है? सर बचा है, लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि
जब भी स्ट्रैटेजी सभी लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना, वो स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा। हाँ, सो बेसिकली वही हो गया ना साकेत के अभी कोई भी स्ट्रैटेजी है, फॉर एग्जांपल एक XYZ, उसका बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बट फॉरवर्ड टेस्टिंग में तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, बिकॉज कंडीशन चेंज हो गई है, रूल्स चेंज हो गए हैं। पहले रूल्स भी थे, लिमिट्स मिलती थी, बहुत सारी लिवरेज होते थे और किसी को पता भी नहीं था। अभी पता भी चल गया है, लिवरेज भी बंद हो गई है, तो अभी इट्स बिकम वेरी इजी मनी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट easy actually now. Sir, actually, I also look at it in a different way. I feel these systems, any system you take, is like a cycle of a stock. So, for example, if you see pharma, so one point, especially during 2012 period to 2015-16 period, pharma was in a big boom. It did really well. From 16 to 22-23, no performance in pharma. Again, it has started doing very well. So it is a cycle. So as of now, there is a bad cycle. So now, if for sellers, it is a bad cycle. Even I am not even talking about system trade. Even discretionary trades are not working for sellers. Okay. So for buyers, if you buy, the market is moving in such a way that one or the other time you are going to get a good exit. You just buy 20 rupee option, 30 rupee option. One or the other time you are going to get an exit at 40, 50 rupees. So I feel this whole thing is like a cycle, like how stocks work. So when a lot of, let's say, a good move is coming in banking sector, everybody shifts to banking. That is when something like IT or pharma will start to move, or auto will start to move. Then everybody will come there and something else will start to move. Okay. I feel it is more like a cycle. Everything will work. Maybe when a lot of participation is there in one thing, at that point it might not work the same way. Okay. So now Saketh, आप कोई भी मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जो हमारे व्यूअर्स फॉलो कर सकते हैं, और आप अगर उसमें कुछ गाइड कर सकते हो तो बता सकते हो अगर आप। श्योर सर, मैंने एक सिंपल इंट्राडे स्ट्रैडल के स्ट्रैटेजी बताता हूँ। डिस्क्रिशनरी बेस्ड स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी बताने के पहले मैं इम्पॉर्टेंट 2 और 3 चीज़ बोलना चाहता हूँ। पहला चीज़, जब भी आप ट्रेड करते हो, वेन एवर यू आर ट्रेडिंग, you should understand your own trading. So you should understand what is the amount of profit you are making on an average. For example, sir, आप stocks करते हो, so आपको पता होगा like एक average आप कितना profit कमा सकते हो जब भी आपका bet right हुआ तो। हाँ, एक ट्रेड में। एक ट्रेड में। So basically I focus on a monthly and weekly time frame. So whenever my trade gets proper right and my analysis get right, so normally we get 50% return in one stock, but it takes 6 to 7 months. Right. So here what you would surely focus on is also with respect to risk. So you would be looking, okay, to get that 50%, what is the risk? So if you are getting 50%, is my risk 10%, is my stop loss 10%, is my stop loss 20% or 30%. If the risk is not good, you are not going to take the trade. Correct. So in intraday also, if you approach trading with this perspective, it is going to be very good. So जब आप समझते हो, जब भी आप right होते हो, कितना profit आप कमा सकते हो। For example सर, average जब भी मैं right होता हूँ एक दिन में 0.3%, 0.2 to 0.3% में बनाता हूँ। Okay. So average मेरा probability 57% है। सिर्फ 57% ऑफ द टाइम्स मैं राइट होता हूँ। रिमेनिंग 43% ऑफ द टाइम मैं रॉन्ग होता हूँ। So I know the statistics of my trading. I am only right 57% of the times and I am wrong 43% of the times. Okay. I also know for a fact that on an average I am only making 0.3% when I am right. So when I know these things, it is very important for me to make sure that I don't lose more than 0.3% on the days when I am going wrong. If I just keep this in mind, any strategy is going to work. It is not just straddle, it is not just strangle. Even buying strategy is going to work. So two things what you have to focus is what is your probability. So how, just go back, look at your ledger, look at your P&L report, how many days you have made profit. Out of the previous year, if you have made profit for assuming around 200 days and 150 days you have made a loss.
So totally there will be around 250 days, assuming that you have made profit for 150 days, made a loss for 100 days. So now you know you have higher probability. Even if you focus on 1:1 risk to reward. On an average, whenever I'm making profit, if I'm making 10,000, I should just focus on not losing more than 10,000 on the days when I'm wrong. And overall, I will be profitable. It will work for any kind of strategy. So now, for example, if you know for a fact that your option, let's say you're an option buyer, you know that your probability is just 33%. That means whenever you're taking any trade, your risk to reward has to be at least 1:3 for you to break even. So Correct. you should be focusing on risk to reward of something like at least 1:4 to be profitable. So that time, even if 33% of the trades go right, you will still be profitable. In a profit. Yeah. So this is a simple rule, what we have to keep in mind, before which we have to try to analyze our own trades. How are our trades going? So what is the probability that I am trading with? What is the risk to reward I am trading with? This is actually going to help people to understand their own trades better so that they can improve their trading overall. Okay. So at what time you place your trade? Sir, there is no fixed timing as such. So for example, I will just show you on a screen recording. I generally use a 5-minute chat. So today our trades went wrong. So basically you do intraday trading. Yeah, we do intraday trading. Okay. So we do positional trading as well as we do intraday trading. Okay. So today, if you actually look at it, is 4th of August and the markets opened, let me just zoom in. So the market opened somewhere over here. Right. So my idea, as soon as the market opened, the market consolidated and almost around 20 minutes. So each candle is 5 minutes. Correct. So almost around 20 minutes, the market was consolidating. So what I thought is, okay, let me just create a straddle around 44,700 because the market is consolidating around 44,700, and I collected total of 500 points. So 250 from the call side, almost around 300 from the put side. Okay. So almost around 500 to 550 points. So which strike price you sold? 44,700. 44,700. And market was trading at that price. Market was trading at that price. So technically, if I wait till expiry, my break even would have been 44,150 and 45, close to around 250. Okay, so market is closed at that level only, right? Yeah, so market is between this, but unfortunately, we ended in a loss today. So I will also explain you how exactly we ended in a loss. So what happened is the market actually came down. So we didn't do anything. So we were expecting the market to consolidate around the range of 700 itself, but the market actually came down, and then luckily for us, by 10 o'clock, 10:30, the market came back to our level which we were looking at. So then what happened? The market actually surged suddenly. Right. So when such sudden up move or sudden down move comes, the premiums become imbalanced quite a lot. So what we had sold at 250 had gone to 520 rupees. And So you don't keep stop loss there? no, we don't keep stop loss. We look for important levels to be breached. I will tell you where I exited also. Okay. So I had gone to 520 rupees, but we had exited long back. So on the other hand, we also had put options which we had sold at 300, which was just trading around 200 rupees. So we, what we did is we saw that the market was going up, and this level was a crucial level for the market because today morning it opened here, then it saw selling. Previously also the market tried to take support here, and we saw selling post that. So we were just, I'll just remove these lines so that it is not confusing. So when you actually look at it, this was a crucial level because earlier the market had taken support here, it had broken down. Today it tried to open with a gap up, but there was a selling. And once the market opened, went above this level, we cut our call position. So then so your stop loss was not hit actually. We don't keep a stop loss. We don't keep a stop loss. Just we you exit your position because market went up. Yeah, we just exited our call position, and we shifted our calls farther away. So let me just show you what exactly ends up happening.
So I'll just go to simulator. I don't know if, okay, today we can actually simulate. So initially around morning 9:20, this would be much better to show. So initially around 9:20, we had shorted 44,700 call and put. So we had collected 600 points, and these were our break evens. So 44,118 and 45,218. So let me just change the lots to 20 lots. So you trade with 20 lots? Yeah, 20 lots on a 50 lakh account. Okay. So I'll just go ahead. So you can see that initially we were in profit, later we went to a loss. So around this time the market came back. Then again, so around the level of around 11 o'clock, the market actually broke. So let's quickly go to 11 o'clock. So around this time, the market actually started to break the high. So at this time, so after around this time, we exited our call position. So here you can see that the call option which we had sold at 290 had gone all the way up to 370, and the put which we had sold at 290 had come down to 223. Overall, we were at a loss of around 3,660. Okay. Right. So then what happened at this point, we cut our call position. So you can just see our break even right now, sir. So right now the break even is 45,280. So we just cut our call position, and what we did is we went far away and sold one more call. So we sold this call so that our now range increases farther away. So from 45,100 it went to 45,500. Okay, so you shifted your upper range. Yeah, we shifted our upper range by cutting our call position and selling a far OTM call. Okay, but so now you have put also, put which is the older one, like the previous put which you have sold, and now you have call, but new that call. This upper side. Like, yes, upper side. So because what the market came up. Correct, sir. Correct. So what we have done is we have converted a straddle into a strangle. Okay. So now both are OTM. So initially we had ATM. Now both are OTM. So we have converted the straddle into a strangle. अगर कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं करते. हाँ, कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं करते. But what is your stop loss? There is some stop loss in your mind? So there are two stop losses. So one, we can go on adjusting till, as I told you, it is very important for a person, as I told you in the first rule itself, to understand at what point he should stop trading. So for us, whenever we start to hit or go closer towards 15,000-20,000 is the time when we actually start to cut all our trades. Because we know for a fact that if I end up losing 50,000 in a day, it will take 3 days for me to actually recover that. So I have to get 3 right days to recover one bad 50,000 day. So that is why it is very important. So once our loss starts to reach close to around 15,000-20,000, it is very important for us to cut our trade at that point. So in this, you made loss today. Yes. So there was no option to convert this loss into profit or manage this loss. Sir, actually there is there are a lot of options. For that you have to continuously keep firefighting. So the idea is for us beyond a point, so I will just give you one example, sir. If you are trying to continuously firefight, that clearly shows that you are not getting the trend of the market right. You are not so basically it clearly says that the first trade you made, and that is wrong. So it's better to exit it and maybe take fresh trades sometime later. Come next day or like sometime later you can just take a simple fresh trade. And also if you are adjusting more than 2 or 3 times, it is just going to show you that no matter what you are doing, you are not able to get the market direction right. So you are always going wrong. So just stop it. You are not able to catch it. It's a trader's ego. Yeah. So it's ego coming in between. So then again, we converted this into a slightly bullish position because our puts are trading at 223, our calls are trading at only 143. So the market further started surging. You can see that in the next 15 minutes, we got one more big surge. And our premiums just become inverted and we went to 10,000 loss.
So this time I thought, okay, the market is now surging and maybe we can actually head higher, because even yesterday the US markets had recovered. So we also broke 45,000 right over here. So I thought, okay, maybe we can actually hold and the markets can go higher. So what I did is I cut all my call option trades. Okay. So now only put option. That means as long as the market goes up, I will be making good profit. So you had carried this Yes, position? only put option. So you are carrying, this is like naked position Naked one position, side. yes, naked position on one side. Okay. So then what happened, the market went in the direction I wanted. My loss also started reducing. So at this point, okay, here the market again started coming down. By this time I had exited. Let me just go a little. So the market went up and it came down again. It started consolidating right over here. Okay. So at this point, it was quite clear that if the market is not able to hold this level, area. now I am naked. So naked put option. So that means my room for error is very little. So I have to get out of the trade as soon as market shows any kind of weakness. So right around 12:30, when the market actually broke this level, I actually couldn't wait any longer and it was time for me to come out of the trade. So around 12:30, so let me just go back a little. So when the market actually broke the level, and so this was the time. So you can see that the market suddenly fell, and around this level, when market came to around 905, so at a loss of around 17,000, I closed all my positions. Okay. And then what happened is I had stopped trading for a while, and I think after that around 1 o'clock we came and met, and post that once we went for lunch, what I saw is even though Bank Nifty was showing sort of weakness, Nifty on the other hand was holding out strong. So you can see around the time of 1 o'clock, Bank Nifty had actually corrected and come back, but Nifty was holding strong even around 12:40, 12:30, 12:40 level. Nifty was holding strong. So then once Nifty fell, so I thought, okay, it is a good time to go range bound trades in Nifty again, because Nifty is not showing the kind of weakness Bank Nifty is showing. And I again did a simple Nifty straddle, and I was able to end the day with a loss itself, but the loss was around 7 to 8,000. Okay, so in Nifty, at what time you did a straddle? So I took the straddle around 1:30, 2 o'clock. Okay, so at the same price. So, but I had taken slightly bullish straddle. So there was a small reason behind that also. The reason was, if you see the last few hours of every day, so this was the previous day, last few hours the market was actually going up. Similarly, you can see the previous day to that also, last hour some good buying was coming. Correct. So I hoped, okay, maybe even this last hour, because from continuously good buying is coming from the past 2 days, market might see some buying towards the end. So I had done slightly bullish straddle, and I was able to recover close to around 10k and ended the day with around 7k loss. So overall the day was in a loss, because this clearly shows that I couldn't catch the market trend properly today. So here I was able to convert the trade into a bullish trade, which was good. Here I went aggressively bullish, but the market reversed, and at this point I couldn't hold. In discretionary, one more thing what happens is, if a trader is really convinced, so if he feels, okay, this is a very good resistance, because previously also we have seen a sell-off from here, so let me hold. So if that was my view, I could have still held my positions here and maybe waited, but I got it wrong. Market outplayed me and I couldn't get that trend right, so I had to book the loss. Okay, so this strategy you are doing regularly on your account? Yes. And what is the return expectation of this strategy? Sir, return expectation would be somewhere around 2.5% a month, 2 to 2.5% a month. Even in best cases, you can go even up till 4 to 4.5%, but that is if you are really lucky. You can. So basically, you are saying 25 to 30% we can make on this strategy. Yes, sir.
And what is the probability of this strategy? Sir, it depends on, okay, so let's say this is your view. So whether are you doing a straddle, are you doing a strangle? So Ayush, for example, generally prefers doing a strangle over straddle. Okay. So the probability when you do a strangle is slightly higher than The compared to longer doing time frame call and put. far OTM. The far call. OTM, okay, yes. Probability increases, but your risk to reward on the other side won't be that great. But on the other hand, doing straddle, probability decreases, but your risk to reward will be quite good. So overall probability would be, say, somewhere around, as I told you, 56, 57% is the number of times I'm going to get the trade right. Okay. So thank you, Saketh. This was very insightful. And suppose this you do in a 5-minute time frame only, Yes. or you change your time frame? Sir, if we are doing intraday, so the thing is, what we try to do is we try to mix everything. So it is only straddles and strangles, but we also do weekly positional, we do intraday. So it's a combination of everything. With positional or whenever we do weekly positional also, the adjustment idea remains the same. So इसी तरह हम सेम एडजस्टमेंट आइडिया लाइक सेम है. जब भी मार्केट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करता है तभी हम उस कॉल और पुट को, जब भी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हम कॉल को कट करके ऊपर का कॉल बेचते हैं. ऊपर का कॉल बेचते हैं और पुट को रहने देते हैं. पुट को रहने देते हैं. और जब भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करता है पुट को कट करके और नीचे जाके पुट बेचते हैं. और जब भी कॉल ऑल टाइम हाई हो गया, मार्केट ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है, तभी हम कॉल को कट करके सिर्फ पुट को होल्ड करते हैं. सो पोजिशनल में भी सेम इसी तरह हम करते हैं. सो हियर यू चार्ट, जो भी आप चार्ट देखते हो निफ्टी का, वो स्पॉट निफ्टी का और बैंक निफ्टी का देखते हो या फिर फ्यूचर निफ्टी? स्पॉट निफ्टी का. स्पॉट, बिकॉज ऑप्शंस प्राइस आर सेटल्ड विद द स्पॉट प्राइस ओनली, राइट? यस सर. Okay. So anything else you want to show to our audience? I think this you are doing, right? Yeah. Regularly basis. Okay. So thank you, Saketh, and I'm really happy कि Saketh ने अपनी strategy के बारे में, मतलब this strategy is not basically Saketh strategy. ये strategy ऐसा नहीं है कि ये Saketh ने बताई है तभी हम लोगों को पता चला है. True, sir. This strategy is basically publicly available with everyone. बट देखो इसने क्या बोला Saketh ने, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 920 को आके स्ट्रैंगल बेच दिया, स्ट्रैडल बेच दिया. द थिंग दे आर डूइंग जो 2017, 18, 16 में चल रही थी, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. तो आप ऐसे भी करते हो ना, कभी कभी आपने स्ट्रैंगल क्रिएट किया है, फिर उसको स्ट्रैडल कन्वर्ट कर देते हो. सो बेसिकली यू आर मैनेजिंग योर मनी एंड योर ऑल द स्ट्रैटेजी विथ योर ओन market view. True, okay, sir. and that is giving you 25 to 30% return annually. True, sir. Actually, maybe to tell one very important thing to the users. So in trading, strategy is nothing. It is as good as Kohli coming and telling that, okay, I know to play a straight drive. Kohli can teach you also to play a straight drive, or he can, even Sachin can teach everybody to play a straight drive. So how well are you going to play is something depends on how well are you going to practice. So if you every day if you do a different strategy, every day you come and tell, okay, today I am going to do ratio, today I am going to do some other thing, today I am going to do some other thing. So you are basically not trying to master anything. You are trying to just do something every time. So it is very important in cricket. What happens is you might get bowled, you might get LBW, you might get caught, right? So otherwise, if you don't try to attempt a shot, right, you will be just wasting the balls and you will make your team lose. But in the markets, the best thing what you have is you don't even have to play. You can play when you want. So you can choose the balls you want to attempt. You want to hit a straight drive, wait. You are not going to get out by waiting. You are only going to get out when you try to attempt. So when you try to attempt to do something which is not in your zone, so when something is out of your zone and you try to attempt to hit the ball, and that is when you are going to get out. So it is again, it is not just related to practicing straight drive alone. So now, if, for example,
Kohli, if you actually look at it, was in a drawdown phase in 2021. So what do I mean? He was not able to hit a single century for almost around 3 years, not a single century. His performance was pathetic, right? So he didn't tell that, okay, tomorrow I will start bowling. Tomorrow I will start wicket keeping. He was stick with the batting only. He stick with the batting. He knew that, okay, the most important thing is the confidence, right? So as like in trading or as traders, it is very easy to lose confidence. 2-3 trades go bad, you start to get scared. How shall I enter a new quantity? I think paisa lose karna is different thing and confidence lose karna is very different thing. When confidence is not there, even no matter how much money you have, you won't be able to execute it right. So what I am basically trying to tell is strategy is available everywhere. It is not that golden strategy which is going to make you money. There is no holy grail strategy. There is no holy grail strategy. It is just how well you are going to execute it. How well. So you just have to आपको मतलब सिर्फ market condition देखनी है and अभी क्या चल रहा है, क्या condition है, वो हिसाब से आपको strategy plan करनी है. And you do positional option selling also and intraday selling also. So generally आप रोज intraday selling करते हो या you come to on a expiry day only? No, we do it every day. But here what happens is quantity हम decide करते हैं कि हम कितना confident है. जब हम बहुत confident हो तो ज़्यादा quantity straddle सोचते हैं. तो ये बहुत confidence कौन से time में आया है आपको? बहुत expiry के दिन या फिर? अभी मैं ड्रॉडाउन में चल रहा हूँ. मेरे अकाउंट जुलाई से 2.5% नेगेटिव है. ओके. सो मैं अभी कंजर्वेटिव खेलना चाहता हूँ. जब तक मेरा ड्रॉडाउन पूरा रिकवर होगा मैं कंजर्वेटिव खेलना चाहता हूँ. 2.5% नेगेटिव है. एक मंथ ऑलमोस्ट अराउंड 35-40 डेज हो गया. सिर्फ अभी भी लॉस में है. एक 2.5% रिकवर करने के लिए ऑलमोस्ट अराउंड पूरा अगस्त जाएगा. बिकॉज ऑन एन एवरेज मैं सिर्फ 2.5. सो ये तो फिर आपके ईयरली रिटर्न पे इम्पैक्ट करेगा या आगे जाके कवर अप हो जाता है? ईयरली रिटर्न पे इम्पैक्ट करेगा. इसलिए ओवरऑल अराउंड 20-25% हम ईयरली कर सकते हैं. और इक्विटी, सिंस इक्विटी को प्लेज करके हम करते हैं, इक्विटी 10% ऐड करेगा. सो टोटली अराउंड बेस्ट केस 35-40% तक जा सकते हैं. सो थैंक यू साकेत, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये चीज़ समझी होगी. बेसिकली साकेत आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप सब स्ट्रैटेजी सीखो बट अप्लाई कभी करना है, कैसे करना है, उसका डिसीजन आपके ऊपर रखो. और ये 920 स्ट्रैडल ऐसा इट्स नॉट कंपलसरी कि 920 स्ट्रैडल हर साल काम करेगा. एक साल काम किया है तो शायद नेक्स्ट ईयर काम भी नहीं करेगा और उसके बाद काम करना स्टार्ट करेगा करना. और पता चला जब वो काम कर रहा था तभी आप ट्रेड नहीं कर रहे थे, तभी आप बैक टेस्ट कर रहे थे. और जब आपने काम चालू किया बैक टेस्ट करके कॉन्फिडेंस लाके, तब वो स्ट्रैटेजी ने एक साल लॉस किया. और जब आपने बंद कर दिया तभी से प्रॉफिटेबल हो गया. सो दिस इज व्हाट बेसिकली दिस इज ट्रेडर्स लाइफ. सो साकेत इज बेसिकली ट्राइंग टू से दिस थिंग आल्सो कि मार्केट कंडीशंस हमेशा चेंज होती है. आपको मार्केट कंडीशंस अगर आपके फेवर में नहीं है तो क्वांटिटी कम कर दीजिए, थोड़ा कम रिस्क लीजिए पर मार्केट में रहिए. और जब मार्केट कंडीशंस आपके साथ आ जाती है तो अगेन कम विद अ गुड क्वांटिटी एंड मेक प्रॉफिट. बट आप मार्केट में रहिए, मार्केट से बाहर मत जाइए. जा सकते हैं. लाइक मैं भी 2-3 हफ्ते के लिए एक ब्रेक लिया था इन 2021 जब मेरा 4 महीने के लिए ड्रॉडाउन हुआ था. सिर्फ 5%. लेकिन मैं 4 और 5 महीने के लिए रिकवर नहीं कर पाया. वो सिर्फ 5%. आई कैन अंडरस्टैंड दिस फेस. मैं आपको एक बात बताता हूँ साकेत. बेसिकली आई एम एन इक्विटी ट्रेडर बट मेरे पास इक्विटी ट्रेड मेरे को साल में कितना 20-25 ट्रेड होता है. उसके बाद मेरे पास क्या काम है? आई डोंट हैव एनी वर्क बट आई एम लर्निंग वन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विद माई फ्रेंड. तो वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी वी आर फॉलोइंग सिंस लास्ट 6-7 मंथ राइट. सब अच्छा चल रहा था स्टार्टिंग में जब मार्केट का ट्रेंड अवेलेबल था. फिर अप्रैल ईयर स्टार्ट हुआ तो हमने क्या किया, प्रीवियसली वी वर डूइंग रैंडमली एनी क्वांटिटी इन बैंक निफ्टी. तो मैंने क्या उसको बोला कि यार लेट्स डू इट प्रॉपर्ली.
अगर ये इतना 4 महीना काम किया है और अभी नेक्स्ट मंथ अप्रैल आने वाला है, तो वी विल कीप वन सिलेक्टेड क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी को हम लोग 1 साल तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने अप्रैल से स्टार्ट किया इन बैंक निफ्टी। इन द मंथ ऑफ अप्रैल हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, जैसे आ रहा था वैसे। इन द मंथ ऑफ मई वो प्रॉफिट हमारा पूरा चला गया, बिकॉज मई में सेम लॉस हो गया। जून में उससे ज़्यादा लॉस हुआ, जुलाई में भी लॉस हुआ, बट लास्ट में 2-3 ट्रेड प्रॉफिट हुए। बट बिटवीन मई, जून एंड जुलाई कंटिन्यूसली हम लोग ने 15 से 16 स्टॉप लॉस हिट किए। एंड ऑल स्टॉप लॉस वाज लाइक प्रॉफिट आने के बाद वापस नीचे आता है और फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग जब हम लोग ड्रॉ डाउन में होते हैं, जब हम लोगों का स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली हिट होता है। तो हमारे साथ 2-3 फ्रेंड्स ने और शुरू किया था, उसमें से सब ने बंद कर दिया, सिर्फ मैं और मेरे फ्रेंड अभी भी शुरू कर रहे हैं। एंड अभी लास्ट 2 ट्रेड जब बैंक निफ्टी गिरा, एक तो हमने बैंक निफ्टी का ऊपर का ट्रेंड भी आया, उसमें वी गॉट 1000 पॉइंट। एंड अभी जब बैंक निफ्टी अभी रिसेंटली गिरा 1-2 दिन पहले, तब हम लोगों को 950 पॉइंट्स मिला। सो अगेन स्लोली स्टडीली कॉन्फिडेंस आ रहा है। बट व्हाट मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि जब ये ड्रॉ डाउन होता है तो क्या इमोशनली हम कैसे हो जाते हैं, एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लाइक सबका स्टॉक चल रहा है, सबका स्ट्रैटेजी चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है। दैट इज एक्चुअली ऐसे ही एक ट्रेडर एक रियल ट्रेडर बनता है। करेक्ट सर। सो वो बहुत हार्ड फेज होता है, क्योंकि आप किसी के सामने जाकर और किसी के पास जाकर आप बोल नहीं सकते हो मैं लॉस कर रहा हूँ। आप बोल भी दिया तो दूसरे वो लोग बोले क्या ये इसने क्या कर लिया 15 साल मार्केट में, ऐसा होता है। सो दैट वो भी नहीं समझेगा आप क्या तकलीफ में हो। और दूसरी चीज़ ये होता है कि जब आप वो फेज में रहे थे ना, आप आकर ऑर्डर नहीं डाल सकते हैं ठीक से। I can understand that thing. तो जब वो समय चल रहा था, दिस इज अराउंड 2021 अक्टूबर से 2022 मार्च तक, तो मैंने 2-3 हफ्ते ब्रेक लिया था। सो कुछ भी नहीं किया। और फरवरी 1 बजट के समय मैं वापस आकर मेरा पहला ट्रेड मैंने लिया। सो दैट इज़ वेरी गुड साकेत, एंड आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा है और साकेत ने जो बोला है वो आप लोगों को समझ में आया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो। साकेत का भी एक यूट्यूब चैनल है, एंड साकेत वहाँ पे भी कंटिन्यूसली वीडियो डालते रहता है। अभी वो वीक में एक वीडियो डाल रहा है, पर अब जाके देखिए कि कैसे रियल ट्रेडर भी काम करते हैं। देखो साकेत के वीडियो में यू विल नॉट गेट बहुत सारी चीज़ें। साकेत विल कम एंड इन वीडियो एंड जो भी अपना पॉइंट टू पॉइंट है वो बोल के जाएगा, बट आप समझो कि ट्रेडर कैसे देख रहा है मार्केट को, क्या चल रहा है एंड ऑल। तो साकेत की जो भी सोशल मीडिया के लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो आप साकेत को कमेंट्स में पूछ सकते हो, साकेत उसका रिप्लाई आप लोगों को दे देगा। एंड अगर आप लोगों को लगा है कि ये वीडियो यूज़फुल है, तो आप ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो साकेत, मैं ये चीज़ पूछना भूल गया आपको कि क्या कोई पर्सन स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बन सकता है? सर फुल टाइम ट्रेडर बन सकता है, लेकिन उससे पहले 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। पहला चीज़ फाइनेंशियल कमिटमेंट जो होता है, जब भी एक पर्सन को उसका फैमिली सपोर्ट करना है और लोन लेकर मार्केट्स में आता है, सो वो सब मार्केट में पहले बार आने के लिए ठीक नहीं है। जब भी आप लोन लेकर मार्केट में ट्रेड करने आते हो और सभी गवा देते हो, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि लॉट ऑफ पीपल कम टू ऑफिस विद द सेम इश्यू। So people they would be earning 20,000-30,000. So they want to make additional 10,000 or 15,000. So what they will do is they will go take a loan from somewhere 5 lakh. So they will lose everything in the market. So to recover that, they will go take 5 lakh somewhere else. Because now they don't know what to do. So they will go take 5 lakh somewhere. They will मतलब वो ट्रैप में फंसते जाएंगे। ट्रैप में फंसते जाएंगे। और सो लोग आते हैं बोलकर 30 लाख 40 लाख का लोन है,
सिर्फ मुझको 5 लाख दो ट्रेडिंग करने के लिए, मैं सब कुछ रिकवर करके, सो आई विल आस्क इफ़ यू couldn't recover with so many 5 lakhs, now how will you recover with 40 lakh? सो वो बहुत गलत होगा। आप जब भी एक कमिटमेंट में हो, कमिटमेंट नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पर है तो लोन लेकर ट्रेडिंग में मत आइए। सो मैंने भी एक किया था, मैं एक गलत किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं लोन लेकर ही ट्रेडिंग में सब मेरा पहला कैपिटल था वो सब बॉरोड था, लेकिन एक बात पर विश्वास था, जो मैं 1 लाख और 2 लाख कोई भी लाइक इफ आई लूज like I can repay that 2 lakh or 3 lakh. It was not a burden. मतलब आपने बोरो किया था पर आप उसको रीपे करने की कैपेसिटी रखते थे। सो हमको जब डर हुआ, जब हमारा कैपिटल 30-40 लाख तक चला गया, सो हमको भी पता था कि अभी कुछ लॉस हुआ तो को हमारा पॉकेट से पे करने के लिए और हमारा पेरेंट्स के पॉकेट से पे करने के लिए इतना पैसा नहीं है। सो तभी हम बहुत like very carefully made sure that we are not losing more than 5-6% in any worst case. So all our trades are such that we don't lose more than 4-5-6%. So full time आप आ सकते हो। पहले फुल टाइम आने के क्या चीज़ होगा सर, आप रिस्क और रिवॉर्ड देखिए। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अर्निंग 1 lakh and your capital is 50 lakh, it is not worth quitting your job to trade. Why? Because in the market also you can make 24%. You are already earning 1 lakh a month, which itself is 12 lakh. So the same thing you will be making in market, but when you are earning 1 lakh a month, simply invest that, you will be making 10% extra. So you will be making almost around 12 lakh it will be 10% extra. So now if your capital is 1 crore and you are earning 1 lakh a month, even now it is not worth to quit something stable which is giving you 12% return a year. Plus 12% you can still make it by investing. So whatever 1 crore, if you have a capital, invest that, you will make 12 lakh or 12% return with investing. You are making 12% return with your job. So you are still making 24%. Even now it is not worth for you to quit the job, which is a stable source of income, to earn the same thing which is unstable. So when can you quit the job? So when the total pros is way above the total cons. So basically आप ये बोलना चाहते हो कि पहले आप जॉब करिए, पैसे बचाइए, जमा करिए, इन्वेस्ट करिए, एंड देन फिर आप एक पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते 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 फिर आप एक स्टेज पे ऐसे आइए जब आप फुल टाइम कर सको, इतना कैपिटल आपको कर लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आई फील दैट हम बहुत लकी थे। सब कुछ 2017, 18, 19 या 20 में सब कुछ ठीक से चला। हाँ, एक भी थोड़ा गलती होता तो ये सब कुछ भी नहीं रहता। हाँ, करेक्ट, राइट। सो लकी होना हमारे हाथ में नहीं है। करेक्ट। सो बस यही था आज का हमारा ये वीडियो। मैंने कोशिश किया कि आपको मार्केट की रियलिटी बता सकूं और बोल सकूं, तो बस यही था। अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू साकेत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।